Hello students. Let us discuss. This is also one of the most important topic as well, and sometime you find difficult. What is that is refractive index. So basically, if we just talk about refractive index, what we have to keep in mind and what is the things which we have to see. It's very simple. See, let us consider that we have two mediums. Now, this is the first medium and this is the second medium. Okay. So I am just giving you a simple example that we know that the speed of light is maximum in vacuum. So if I just talk about speed of light, so you will say that sir, speed of light is in vacuum. That is maximum value and that is equal to 3 into 10 is to power 8 meter per second. So this is the speed of value in vacuum. This is a universal constant and it is represented as C. So the value of C is 3 into 10 is to power 8 meter per second. Means the speed of light in vacuum is this one. Now this is the maximum value. Okay. If we encounter any of the medium, suppose this is the first medium and this is the second medium. Okay, these two have different mediums. We don't know first medium is which one and second medium is which one. Okay, we don't know. So what happens actually, that light ray which is coming from vacuum, it just enters to this particular medium. As this light ray enters, so when here you can say here it was vacuum, so here it was vacuum uh, outside the this uh, this slab or something like that, you can say. So here what is the speed was C. As it enters this medium, the speed changes and it becomes V. So first of all, you have to keep in mind that the value of V will be less than the value of C, because the speed of light in vacuum is maximum. Suppose this is glass or water or something like that. This is medium 1, this is a denser medium, and this is the also you can say that is second medium. These two mediums are different. So basically when it enters the first medium, its speed becomes V1, and when it enters the second medium, its speed becomes V2. So basically ये जरूरी नहीं है होता है कि अगर यहाँ पे 3 इंटू टेन टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, यहाँ भी 3 इंटू टेन टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो सकता है जैसे इसमें एंटर करा स्पीड हो गई 2 इंटू टेन टू पावर 8, हो सकता है जैसे इसमें एंटर करा स्पीड हो गई 2.5 इंटू टेन टू पावर 8. सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी भी मीडियम का, अगर मैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो वो क्या है, दैट इज C बाय V1. मींस जैसे ही इस मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कितने टाइम्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. बेसिकली ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है. मतलब अगर मैं यहां से वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो C बाय N. क्लियर. तो ऐसे आप बेसिकली वेलोसिटी निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे अगर मुझे इस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो 3 इंटू टेन इज टू पावर 8 एंड V1 इज व्हाट 2 इंटू टेन इज टू पावर 8. तो फर्स्ट मीडियम का अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूंगा तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, इट इज 1.5. तो 1.5 जो है वो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर. सिंगल किससे कंपैरिजन कर रहे हो आप वैक्यूम से कंपैरिजन कर रहे हो, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये एब्सोल्यूट हो गया. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड आउट करते हो लाइट इन दैट मीडियम, तो बेसिकली जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड कर रहे हैं उसकी स्पीड डिनोमिनेटर में और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. So this is absolute refractive index. So this is absolute refractive index. Similarly, if we are finding refractive index of second one, that is also absolute. That is 3 divided by 2.5. So that is coming 36 by 5. So this is the value. तो यहाँ आपको पता है that n, the value of refractive index, it is represented by n, C by V. So you can see C is also in meter per second
and velocity is also in meter per second. This is also a velocity, but this is a velocity in vacuum. और ये किस में वेलोसिटी है, किसी भी मीडियम में हो सकती है, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में कितनी वेलोसिटी है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। वो आपको सपोज दी है। तो c का वैल्यू फिक्स है, तो मीटर पर सेकंड तो बोथ विल गेट कैंसल्ड आउट, सो इट्स अ रेशियो, इट्स जस्ट अ रेशियो, सो इट हैज नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, कह सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो इसमें आपको याद होना चाहिए, जो पता होना चाहिए, वो क्या है, दैट n इक्वल्स टू c बाई v होता है सर, हाँ ठीक है, वी गॉट दिस। सो as I have started, I have told you that the speed of light in vacuum is maximum. So if you will think about it, so we can say that the value of c will be always be greater than v. So we can say that the value of n will be greater than 1 always, because numerator is always greater than denominator. हाँ, अगर आप वैक्यूम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने लग गए तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, c बाय c, बिकॉज वैक्यूम में स्पीड कितनी हो जाएगी v, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में एमसीक्यू में बहुत बार पूछ लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 क्यों नहीं हो सकती, इसका रीजन क्या लिखोगे, दैट बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम and the speed of light in other medium it will reduces basically. Okay, so this is the refractive index. So basically अगर मैं आपको, if I'll give you that refractive index of any medium is 3 and refractive index of any medium is 2, so if you're finding the velocity in that medium, suppose, so what will be the velocity in that particular medium, so velocity in that particular medium will be, as we know, n equal to c by v. So what is the v value, v will be equal to c by n, so it will be 3 in divided by 3 into 10 is to power 8. Okay, so इसका मतलब क्या है, 1 by 3 times, यानी कि इतने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी इस स्पीड से ना। तो स्पीड भी निकाल सकते हो आप बेसिकली वैसे 1 इंटू 10 इज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं ऐसे बोल दूं आपको, इफ आई से यू that we have two mediums, okay, so suppose this is the first medium and this is the, again we have this is the second medium. Now if I'll ask you that this is the first medium and this is the refractive second medium, so this first medium having a refractive index of n1 and the second medium is having a refractive index of n2. So if I will say you that what is the refractive index of first medium with respect to second, first medium with respect to second, so n12, refractive index of 1 with respect to 2, so that is equal to n1 divided by n2. So this is known as relative refractive index. This is known as what, relative refractive index. Let me give you one example. Suppose we have suppose there are 10 students, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 students are there in class, and somehow is getting 7, some is getting 9, someone is getting 5 6 5 6 7 8 9, like this marks somebody is getting. So if we are comparing their marks with the standard value, that is 10 out of 10, if if I'm comparing their marks, if I'm just finding the ratio of their marks out of 10, so that is absolute basically, that is absolute. Okay, we have a fixed value 10, but if I will compare the marks of each and everybody by this person who is scoring 9, so that is basically a relative to this is a b c d. So basically if I am finding absolute marks of b, if I am finding absolute marks of b, that is ratio we are finding, then it will be 9. But if I am finding absolute mark of a, it will be 7 by 10. Okay, but if I am finding relative of a with respect to b, so relative of a with respect to b is 7 divided by 9. So this is relative refractive index basically. Whenever we are studying with relation to someone else, so that is relative refractive index. So this is relative refractive index of 1. So we can write down refractive index of 1 divided by refractive index of 2. So basically n12. So you have to keep in mind, इसको एक बार लिख के देखना अपने आप से। अब n12 का जो वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 क्या होगा,
ओके सर, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट विल बी सी बाय v1 और सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा c बाय v2. So what you will write the definition of relative refractive index, that is refractive index of medium 1 with respect to another or with respect to medium 2, that is known as relative refractive index. Okay, so n12 equal to refractive index of 1 divided by refractive index of 2. Okay, so what is the refractive index of 1? It is c by v1 divided by, it is c by v2. C get cancelled out, v2 upside and v1 downside. So n12 can be calculated as v2 divided by v1. Simple. We can write this also. So this is the another expression for what? This is another expression for relative refractive index. So relative refractive index of relative, you can use the form term relative refractive index of 1 with respect to 2 is equal to speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium 1. So if you will see the NCERT textbook also, you will come to know that here also I think you can see this. Yes, this is absolute speed of light in here to that of speed of light in medium. So absolute is simply medium simply called its refractive index. Okay, so this is absolute. These are the refractive index of certain let me just find out. Yes, here it is. See, this is the relative refractive index. So don't get confused by by observing these formulas. You can easily find out. It's not too much complicated. So N21 means what? N21 means what? Refractive index of N21. N21 refractive index of second divided by refractive index of 1. 2 with respect to 1. So N21 C by V2 divided by C by V1. So N21 will be equal to C get cancelled out, V1 upside चला जाएगा, V2 downside आ जाएगा. So N21 will be equal to this one. तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपल. आपको अगर सिंपल ये चीज क्लैरिटी है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्लैरिटी है, तो यू वोंट बी फाउंड इट डिफिकल्ट. अब इसमें बेटा तीन वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल्स 1 2 एंड 3. कोई भी दो दिए हैं तो तीसरा हम निकाल सकते हैं. इसमें भी तीन वेरिएबल्स हैं. कई बार प्रॉब्लम ये आती है दैट क्वेश्चन में पता नहीं चलता है सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट डाउन द गिवन टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ना, द गिवन टर्म्स. जैसे ही आप गिवन टर्म्स लिखते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको लिस्ट आउट करें. आफ्टर दैट आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा कि किस कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा और क्या इसमें लगेगा. ओके, होप सो यू find it interesting and it will help you out. Okay, thank you.